गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट टाइप देखा था। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। सो जैसे कि कल हमने देखा था कि कंटेनर बेस्ड प्रॉब्लम्स, एक कंटेनर में एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो, सो हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी, फिर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड क्वांटिटीज़, दोज वी हैव सीन। Today we are going to see about the alligation, means two mixtures are mixed together. तो अगर उनकी MRP डिफरेंट है, उनकी कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सो दैट वी विल सी नाउ। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज अबाउट द फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू प्लेस द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। सो मिक्सचर एंड एलिगेशन में जब दो मिक्सचर्स मिक्स होते हैं, सो एक मानो सस्ता है, एक थोड़ा महंगा है, तो महंगे वाले में जब हम थोड़ा सा सस्ता मिलाते हैं तो रिजल्टेंट में कुछ प्रॉफिट कमाता है शॉपकीपर। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट वी विल सी टुडे। सो व्हेन द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड टुगेदर, हाउ डू वी राइट इट डाउन? चीपर जो सस्ता है उसका हमें लेफ्ट साइड में टॉप पे लिखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है उसकी, राइट? इट्स नॉट सेलिंग प्राइस। आई होप कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस आपने सुना होगा। कॉस्ट प्राइस इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दैट प्रोडक्ट, ठीक है? एंड सेल प्राइस इज द प्राइस एट विच वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट। सो कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस आर बोथ डिफरेंट, ऑलराइट? सो कॉस्ट प्राइस of cheaper material or cheaper thing and cost price of dearer means costlier, ठीक है? तो आपको इस तरीके से लिखना है। सो आपको ऐसे x बनाना है जिसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर विल कम ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट, राइट पे आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्टलियर, बीच में जो आएगा दैट इज मीन प्राइस, मतलब द प्राइस एट विच शॉपकीपर इज सेलिंग द रिजल्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अ मीन प्राइस, that will come at the middle, okay? अब हमें subtraction diagonally करना है। जैसे costlier का जो cost price है that will be obviously more than the mean price, इसलिए हम उसमें से mean price को माइनस करेंगे and cheaper में से cheaper अपन cost mean price से माइनस करेंगे। So diagonally we have to do the subtraction, okay? So first understand this formula, then you will understand how to use it in the problem, ठीक है? सो ये आज फॉर्मूले पे ही हम दिन भर एक घंटे तक काम करेंगे नाउ। सो मीन प्राइस विल बी द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट एंड एक्स में हमें डायगोनली सब्ट्रैक्ट करना है। मीन प्राइस में से सस्ता वाले का कॉस्ट प्राइस वी विल माइनस एंड महंगे में से मीन प्राइस वी विल माइनस। सो रिजल्टेंट थिंग्स विल कम एट द बॉटम। So there is a first problem. A milk X costing rupees 12 per kg is mixed with another milk costing rupees 18 per kg. After mixing, the cost of new milk becomes 14 per kg. So find the ratio of X is to Y. ठीक है? Now I'll solve along with you so you will understand. सो एक है 12 रुपीज़ का, एक है 18 रुपीज़ का, ऑन मीन प्राइस है 14 रुपीज़ पर केजी, राइट? सो इफ़ वी राइट x and y, and as I said you have to make an x, right? So this is cheaper, this will be costlier, okay? So one is rupees 12 per kg and this one is rupees 18 per kg, and resultant we will write at the middle, so it is 14 per kg. So 12 rupees per kg का मिल्क एक है प्रोडक्ट, दूसरा 18 rupees per kg. We are mixing these two and the product we are selling for 14 rupees per kg. So we have to find the ratio ऑफ एक्स इज टू वाई। अब भले हम सब्ट्रैक्शन ऐसे करते हो, लेकिन x यहीं पे आएगा और y यहीं पे आएगा,
ठीक है. So now you subtract 18 minus 4 is 4 and 14 minus 2 is 12 is 2. So x is to y is 4 is to 2. So this will be your answer for x is to y. अगर y is to x पूछा होगा तो that will be 2 is to 4. ठीक है. So moving back to our PPT, we will see how do we do. 12 is this. We will write as it is. 14 min price we will write at the bottom. Then subtract diagonally and you will get x की value x के ही side पे, y की value y के ही side पे. So x is to y is asked. So our ratio is 4 is to 2. So that we can simplify further to 2 is to 1. Solution X contains 60% alcohol. In what ratio pure alcohol must be mixed with it so that the new concentration of alcohol becomes 70%. अब जबकि वहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है 60% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है एक, उसमें प्योर अल्कोहल हमें किस हिसाब से मिलाना है कि रिजल्टेंट concentration becomes 70%. So what will you write on both the sides? cheaper के यहाँ हम लिखेंगे 60%, कॉस्टलियर के यहाँ क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे कॉस्ट वाइज नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाइज है, राइट? सो लेस कॉन्सेंट्रेटेड ऑन लेफ्ट साइड एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन राइट साइड. So less concentrated क्या है? 60% alcohol. So 60 we will write here. Resultant solution is 70% concentrated. Then what will come here? अगर एक solution 60% concentrated है, we are talking about alcohol concentration. So maximum concentration कितना हो सकता है alcohol का solution में? No, we have to consider the highest in this case. जब concentrations के बारे में हम बात करते हैं, that time we have to consider the highest amount, which will be 100%. Yes, means pure alcohol. We are adding pure alcohol, right? What the problem is saying? Solution X contains 60% alcohol. So in what ratio pure alcohol should be added in the solution so that the resultant solution will have 70%. So pure alcohol will have how much alcohol content? 100%, right? So one is 60% solution concentration and 100% concentration. उनको हम मिलाएंगे तो resultant concentration becomes 70%. Now you do subtraction diagonally. So this is 30, this is 10. So in what ratio it should be added? Yes, 3:1. जब इसको इसमें ऐड करेंगे, प्योर अल्कोहल कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्योर अल्कोहल टू द सॉल्यूशन. तो ये 3:1 है, बट प्योर अल्कोहल कितना ऐड करना पड़ेंगे? 1:3 रेशो में, राइट? So that's why our answer is 1:3. In what ratio pure alcohol must be mixed with it? So we have to calculate the ratio of pure alcohol to the solution. ठीक है? Then 24 liters of 5% salt solution is diluted to 2% by adding water. How much quantity of water was added? We have to find the water quantity in 24 liter. So for that what we need to do? We have to first find the ratio. उसका हम fraction करेंगे. Then we will find 24 liter में कितना पानी है और कितना salt content है. Right? So we will build the chart of salt concentration now. जब हमने alcohol concentration का किया था, similar way we will go for the salt concentration.
सो सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे है 5% एंड देन इट बिकेम 2%. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ईयर. जैसे हम अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे, दिस इज अबाउट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. सो इन दिस साइड इफ इट इज 5%, then how much will be at this side? What we are adding? We are adding water. Yes? This is 5. It becomes 2 after adding water. So this is salt solution. This is pure water. So pure water has how much salt in it? Pure water will have how much salt in it? 100 Then how will be pure water? 0. Yes, right. Because we are adding water which has no salt, we are adding water to dilute it, right? तो हमारा 5% salt था वो 2% हो गया. So this will be 0. Getting? Then we do diagonal subtraction. अब यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वी हैव टू फाइंड दी वाटर कंटेंट. तो इनका पहले है 24 लीटर. देन आफ्टर एडिंग वाटर हाउ मच इज द न्यू क्वांटिटी दैट इज बीइंग आस्क्ड, राइट? सो फाइनल वेट बिकम्स, इनिशियल वेट है 24, सो फाइनल वेट वी विल अज्यूम एज x. So we have now linear equation. 5 minus 2 is equal to x and 2 minus 0 is equal to 24. So we will take a ratio and we will find x. That is 36 liter. So 36 liter is the final quantity. उसमें water कितना add हुआ? तो 36 minus 24. That means 8 liter water added to make the solution 2% concentrated. So just understand how to use the formula. First it was alcohol. Alcohol में अपने को ratio पूछा था, pure alcohol to solution. So that's why we have calculated this. Quantity was not given. When quantity is given, you have to write it at the bottom. So initial quantity was 24 liter. New quantity will be 36 liter. So after adding water, the new quantity becomes 36 liter. So how much water was added? 36 minus 24. So that is 12, not 8, sorry. Right? So 8 liter water was added. Yeah, concentration of 3 wines are this much. They are mixed in the ratio resulting in 23% concentrated solution. So find x. अब 10% concentrated solutions 2 parts में mix किया है, तो उसका total कितना हुआ? 20%. 20% का solution है that is added in 3 parts. So उसका हुआ 60% and 30% is added by x part. So we can write it like this. यह है concentrations, यह है number of parts to be added and resultant solution is becoming 23% concentrated, right? So we can have it like this. मतलब we have found the average, you can say. So number of quantity denominator में आएगा sum of the observation upon number of observations, right? So 10 into 2 plus 20 into 3 plus 30 into x upon 2 plus 3 plus x is equal to 23. So after solving this we can find x. So x is 5. That means 30% solution is added 5 parts of it. So जब भी concentrations आते हैं and उसके ratios दिए होते हैं, first जैसे 5 रुपए के 2 coins है मेरे पास, तो टोटल कितनी पैसा है? 5 into 2 we do, right?
सिमिलरली 10% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, 2 पार्ट्स ऐड किए तो टोटल कितनी क्वांटिटी गई है उसकी 20%. देन 60 and 30x अपॉन द पार्ट्स आर एडेड 2 + 3 + x. And this is how we find the x, which is 5. Then 2 same glasses are filled 1/3 and 1/4 with milk. They are then filled up with water and the contents are mixed in pot. Find the ratio of milk and water in the pot. You can go with any other method if you get जो भी आपके दिमाग में आता है, first you follow that method. Otherwise, this is the mixture and alligation method. Now, 2 same glasses are filled with 1/3 and 1/4. तो total milk content कितना हुआ? Same glasses है. So what I said, we will assume the same quantity, right? So we will first calculate the total milk content. 1/3 ग्लास 1, मिल्क एंड वाटर दोनों से भरा है वो, राइट. सो 1/3 मिल्क है तो 2/3 वाटर है, एंड 1/4 मिल्क है तो 3/4 वाटर है. ठीक है. देन वी विल कैलकुलेट द टोटल मिल्क कंटेंट, टोटल वाटर कंटेंट, एंड देन वी विल टेक द रेशियो. सो टोटल मिल्क इन द पॉट विल बी 7/12 एंड वाटर विल बी 17/12, एंड देन वी विल टेक रेशियो. द रेशियो इज 7:17. Now, a barrel contains mixture of wine and water in the ratio. How much fraction of mixture should be drawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water becomes 1:1? ये हमने कल भी एक सॉल्व किया था जो 50:50 रेशो था, that how much water should be added. The same way, but यहाँ पे क्वांटिटी दी नहीं है. So first 3/4 and 1/4 wine and water रहेगा. Then how much fraction of mixture should be drawn off? So we will assume some amount A that would be drawn off. तो कितना amount गया? That was 3/4 of A and 1/4 of A. So that we will subtract from the original, and then we will add amount of A into water, right? So that this kind of problem solved yesterday also. So the same kind of problem I have taken today. 3:1 is the ratio. 3/4 of x. X is the total quantity of the solution. So total quantity में 3/4 है wine, 1/4 है water. ठीक है. Now some part is removed and replaced by water. So how much part is that? So I have assumed if total quantity is 4 liter because 3 + 1 4 होता है. Then wine removed will be 3 liter and 1 liter. New solution with added water will have wine and water equal ratio. So 3 में से 3/4 माइनस करो, 1 में से 1/4 माइनस करो और उतना x ऐड करो. So that will be 4/3. There is कल की भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. You don't need to assume the quantity in that case. But yes, if quantity is known, it is easier to solve, right? So since the denominator is 4, I have assumed the quantity as 4 liter. This is the way also you can solve it if it is the quantity, if it is not given. So 4/3 of what? We assume total quantity as 4 liter. So 4/3 of 4 liter जो कितना होता है? Which is 1/3. So 1/3 water, that is the ratio wine and water. अगर इस रेशो में ऐड किया वाटर तो we will have the equal quantity. Then there is 81 liter of pure milk in a container. 1/3 of milk is replaced by water in the container. Again 1/3 extracted and equal quantity is added. So what is the ratio of milk to water in the new mixture? 1/3 of milk is removed. प्योर मिल्क है, उसमें वाटर है नहीं. सो अगर हम पहले वाले से जो इथेनॉल वाला जो एग्जाम्पल था, इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस क्वांटिटी रिमूव्ड अपॉन कैपेसिटी
रेज टू टी, राइट. सो उससे भी आंसर आ जाएगा. यहाँ पे 2 टाइम्स द प्रोसेस इज रिपीटेड, सो टी विल बी 2. सो अगर हम नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो 1/3 ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ वाटर 2 टाइम्स. सो 1/3 ऑफ रिमूव्ड एंड मतलब 2/3 मिल्क बचा है, उसमें से अगेन 1/3 रिमूव तो 2/3 बचा है. सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, बट येस यू कैन गो फॉर 1/3 मतलब 27 लीटर इज रिमूव्ड, फिर बचे में से भी 1/3 इज रिमूव्ड. सो टोटल क्वांटिटी लेफ्ट विल बी 36 लीटर ऑफ मिल्क and water will be 81 minus 36, that is 45 liter. So what is the ratio of water and milk in the new mixture is 4:5. Otherwise you can go with our yesterday's formula, which was initial quantity 81 into 1 minus quantity removed upon capacity raised to t, right? In that way also you will get the same answer for milk. उसमें आपको 36 लीटर आंसर आ जाएगा. That you will have to subtract it from the original quantity and you will get the water quantity as 45 liter. And then you can get the ratio of milk to water as 4:5. There is milk sample with 50% water in it. मतलब 50% milk है. 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk. Then water in the new mixture will fall down to what percent? मतलब 50-50% मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, उसका 1/3 सॉल्यूशन लिया और प्योर मिल्क में डाल दिया. प्योर मिल्क हैव 0 वाटर, राइट. तो उसका 1/3 अगर हमने उसमें डाला तो नए सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सो लेट द वॉल्यूम बी 300 ml लीटर, क्योंकि हमने वॉल्यूम से भी आप जा सकते हो विदाउट वॉल्यूम भी. सो 300 लीटर मैंने इसलिए किया क्योंकि 1/3 है, तो अगर 1/3 से हमने उसको डिवाइड किया तो अपने को 100 लीटर मिल जाएगा. अगर हमने 3 लीटर लिया तो 1 लीटर हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली यू कैन कंसिडर, राइट. सो लेट टोटल वॉल्यूम भी 300 लीटर. 50% वाटर मिल्क है, मतलब 150 लीटर वाटर है, 150 लीटर मिल्क है. 1/3 of this is removed and added to the pure milk. So 1/3 of 300 will be total milk will be 200 liter, right? So 200 liter of milk will be there and water is 50 liter. So water and milk ratio in pure milk will be 1/4. That means water to milk will be 1/4 of 100% because it's a pure milk. So 25%. I'll again explain this. See, I have assumed the total volume as 300 liter. 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk. तो 300 लीटर में 150 लीटर मिल्क है, 150 लीटर वाटर है. 1/3 ऑफ 300 कितना होता है? That will be the total milk. 100 plus 100 2 times. ठीक है, क्यों किया 2 times? बिकॉज मिल्क एंड वाटर वी बोथ नीड टू फाइंड. टोटल मिल्क हमें ढूंढना है. मिल्क सैंपल है 50%, सो 150 हो गया. बट 300 में से 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क. इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क मतलब जितना हमने निकाला है वो इक्वल अमाउंट में प्योर मिल्क में ऐड किया है. सो टोटल मिल्क बिकम्स 200 लीटर एंड वाटर विल बी 1/3 ऑफ 150, दैट इज 50 लीटर. समझ रहे हो? 1/3 of the solution is removed. So 100 liter of solution is removed and added to 100 liter of pure milk. ठीक है, तो 300 लीटर में 100 लीटर एंड 100 लीटर मिल्क हो गए. सो 200 लीटर इज द टोटल मिल्क. और वाटर कैसे फाइंड आउट किया? 1/3 ऑफ 150, दैट इज 50 लीटर. सो नाउ द रेशियो बिकम्स 1/4. सो वाटर टू मिल्क परसेंटेज पूछा है. द मिक्सचर विल फॉल डाउन टू व्हाट परसेंट? सो परसेंट मीन्स इंटू 100 करते हैं हम.
So 1/4 into 100 is 25%. So the water in new mixture will fall down to 25%. Two vessels A and B. There is a mixture of milk and water. The ratio of milk and water in this vessel is 5:2 and 8:5. In what ratio these mixtures be mixed together so that the ratio of milk water becomes 9:4? So पहले तो हमें total milk quantity ढूंढनी पड़ेगी, total water quantity, and then we will have to see what ratio they must be added, right? So 5/7 and 18/13. See, जब ऐसे आते हैं ना प्रॉब्लम्स, तो what you do, you consider either milk ratio और water ratio. दो कंटेनर से उसमें दोनों मिक्स्ड है, और जब हम तीसरे में कौन से रेशो में ऐड करना चाहिए कि हमें तीसरा रेशो मिल जाए, सो इधर कंसिडर वन पार्ट ऑफ द रेशो और अदर पार्ट. मतलब आप या तो मिल्क के रेशो पे ध्यान दो या वाटर के. Now 5:2 and 8:5 are the ratios. उसमें मिल्क का रेशो है 5/7. You can consider water ratio as well. Water will be 2/7. तो अगर आप यहाँ पे 2/7 कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे भी 5/13 कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? मिल्क इज 5/7 and 8/13 in both the containers. You are getting what I am trying to say? So या तो आप मिल्क का पार्ट देख लो या तो वाटर का पार्ट देख लो. फर्स्ट कंटेनर में 5:2 है रेशो, एंड सेकेंड कंटेनर में 8:5 है. ओके, ये है मिल्क, ये है वाटर, ये है मिल्क, ये है वाटर. नाउ यू नो हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन फ्रॉम द रेशो. सो यू कंसिडर मिल्क पार्ट और यू कंसिडर वाटर पार्ट. मिल्क पार्ट के लिए क्या होगा? मिल्क फ्रैक्शन 5/7, यहाँ पे होगा 8/13, राइट? वी एड देम, दैट इज बिकम डिनोमिनेटर एंड नंबर विल बिकम न्यूमरेटर. ठीक है. अगर वाटर का करना है तो 2/7 एंड 5/13. सो जब भी ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे दो कंटेनर्स में अलग अलग रेशो में है दो सॉल्यूशंस, एंड वी आर मिक्सिंग इट टू द थर्ड कंटेनर एंड गेटिंग न्यू रेशो, सो इन दैट केस हाउ टू सॉल्व इट? Then you form an X. ठीक है. Either you consider milk or water. Let's consider milk. So ये आएगा 5/7 and 18/13, right? कंटेनर 1, कंटेनर 2. बीच में नया कंटेनर में रेशो है अपना 9:4. रिजल्टेंट कंटेनर इज हैविंग रेशो 9:4. सो उसमें मिल्क का पार्ट कितना है? 9/13 एंड वाटर है 4/13, राइट? सो सिंस वी हैव कंसिडर मिल्क पार्ट्स हियर, वी विल कंसिडर हियर 9/13. And then diagonal subtraction will happen and we will get, because since denominator is same, this is 1/13 and here you will have to take LCM. Both are prime numbers, so you have to multiply them. 13 sevens are 91. You must know tables for that, otherwise we have seen the, see how you can remember. Okay, so 13 into 5, 65, minus 9, minus 7, so 63. So it is 2 upon 91. I have taken LCM, nothing much, don't get confused. ठीक है. इसका सब्ट्रैक्शन आया 1/13, इसका सब्ट्रैक्शन आया विथ LCM 2/91. So now what is the question? The ratio of milk and water, what ratio these mixtures be mixed? Now take the ratio. 1:13 by 2:19. Oh sorry, 91 है वो. So it will be 7:2. 13 sevens are 91. अगर आपको मिल्क के पार्ट से मैंने अभी दिखाया, वाटर के पार्ट से लो तो भी आंसर सेम आएगा. इफ यू वांट टू चेक इट आउट, अगर वाटर पार्ट लो तो दिस विल बी 2/7, this will be 5/13 and this will be 4/13, right?
So if we consider water part, but make sure you are considering all water parts only. ठीक है. Now you subtract, this will be 1 and this will be 26 minus 28. I mean 28 minus 26, same, 2 by 91. This will also come as same. So the ratio will be 1 by 13 is to 2 by 91, which is 7 is to 2. So in such cases, you always go for either one side, either milk part you consider or water part. Water part. So the ratio will be 7 is to 2. Got it, Mridulesh? Okay. In what ratio tea at rupees 240 per kg should be mixed with tea at rupees 280 per kg, so that on selling the mixture at 324 per kg, there is a profit of 20%. 240 and 280 क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि सेल प्राइस है? Do you know cost price, sell price? That will be our next chapter. कॉस्ट प्राइस वो होती है जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, जिसको बनाने में जो खर्चा होता है ना, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. एंड व्हेन वी सेल इट, वी ऑब्वियसली सेल इट विथ सम प्रॉफिट, है ना, तो दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. सो नाउ 240 per kg and 280 per kg ये जो है, that are those are the cost prices, but the selling the mixture at 324 per kg दिया हुआ है, right? And this formula is based only on the cost price. So we have to find the cost price of the resultant product first, right? So 240 and 280 we have written as cost prices. But when we had seen the first slide, there was written cost price of cheaper and cost price of dearer, and then mean price. That mean price is nothing but the cross price of the resultant product. अब यहाँ पे जो 324 है, that is the selling price. Mixture is selling, getting sold at 324, right? So we cannot write 324 at the middle. We have to find the cost price of it. Now for that you must know the formula to calculate cost price from the selling price. That I will tell you. Of course, we will come across it in percentage and profit and loss chapters, which are upcoming. So meanwhile, I'll just try to explain you how to calculate the cost price. जब भी हमें बेसिक प्राइस नहीं पता होती है, we consider is as 100. So 20% profit है. 20% profit on 100 rupees means 120 rupees will be our selling price, right? So 120% is given as 324. So what is the original amount? That you will find out, right? This is one method. Those who don't know the formula to calculate cost price from the selling price, what did we do? We assume that the basic price was 100, then 20% of it is 120. So 120% is rupees 324 is given. So what percent, I mean 120% of what is 324? This is how we have calculated. Another method by calculating formula is this. This is the formula. Cost price is equal to 100 upon 100 plus percent profit into selling price. So if you put profit percent is 20 here, selling price is 324. So you can directly get the value as 270. This is the formula we use to calculate cost price. You will come across it in the chapter profit and loss, which we are now will be taking after mixture and alligation. Chapter is over. So any of the method you can use to calculate cost price, but just remember, in the formula you can put only cost prices. Okay. So cost price 240 and 280 we know, but selling price is 324. So we need to calculate the cost price of the mixture. So we have calculated and it is rupees 270. Now we do diagonal subtraction and we will get the ratio. So in what ratio this tea should be mixed?
is 1:3. Means 1 part of 240 to 3 parts of 280. Then the cost price or the selling price we will get 20% profit. ठीक है. Now just try to another problem I have given. How much water should be added to 60 liter of milk at 1.5 liter for ₹20. मतलब एक मिल्क है जिसका रेट है 20 रुपये के लिए 1.5 लीटर. सो एज टू हैव अ मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹10 2/3 अ लीटर. 60 लीटर के दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए जबकि वो दूध 1.5 लीटर के लिए 20 रुपीज़ है, तो वो इतने रुपीज़ में बिक जाए. ठीक है. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 liter milk is 3/2. I have converted mixed fraction into improper fraction. 1.5 का 3/2 हुआ. Cost price of 1 liter of milk 20 into 2/3. Right. Cost price of 1 liter of water, how much it is considered, do you know? It is always 0. Cost price of 1 liter of water is always 0. ठीक है. And cost price of 1 liter of milk we have to calculate. So that is done. Mean price क्या है? 32/3. So now you can find out and take the ratio. So ratio is 1/4. So how much water should be added to 60 liter? 60 liter of, उसमें water का ratio क्या है? 1/4. So 15 liter water should be added. So that the price will be 10 and 2/3. Okay. So what we did, cost price of 20 liter of milk is given. So we have found the 1 liter. Right. अगर 5 लीटर का प्राइस 10 रुपया है तो 1 लीटर का कितना होगा? 2 रुपया. हाउ डिड वी फाइंड? 10/5. सिमिलरली 3/2 upon 20 के लिए वी कैन डू द रिवर्स थिंग. सॉरी 20 upon 3/2. सो 2/3 हो जाएगा उसका. सो 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 40/3. उसमें पानी ऐड करना है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 liter of water is always 0. Cost price of 1 liter of milk is 40/3. Then you do diagonal subtraction and get the values, take the ratio. So ratio is 1/4. In that ratio, water का ratio है 1, milk का है 4 parts. So 4 part milk में 1 part water add करना है. So water to be added is 1/4 of 60, that is 15 liter. So try to solve these practice questions. अगर नहीं आ रहे तो आप मुझे बताओ, I will help you out. A container of 512 liter capacity is full of pure wine. On the first day, 64 liter of wine is withdrawn and filled with water. And again the same thing done on second and third day. So what will be the quantity of wine at the end? So you can use our formula. Initial quantity into 1 minus quantity removed upon capacity raised to T. Yes, Sakshi? 343? Yes, correct. Very good. You use the formula? Yes, ma'am. Okay. Hope everyone is getting. Any doubt, please ask. Container of 1000 liter capacity is full of pure wine again. First day 100 liter is withdrawn and filled with water, and again same thing is done on second and third. Same type of question. अगर water पूछा होता तो you should have minus it from the 1000 liter or 512 liter. But दोनों में y नहीं पूछा है तो no need to subtract at the end. जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा. Ma'am, 7 to 9 liter. 7 to 9. Yes, correct. Very good. Then rural population of a country increases by 4%
whereas urban increases by 18%. Overall population of country increases by 15.9%. So find the ratio of urban to rural. You have to draw that X, place the values and get the ratio correctly. Next, in what proportion should a shopkeeper mix 2 varieties of tea so that the mixture cost rupees 160? These are the simple cost prices. Please try to solve, because even I know and you know after lecture how many of you actually practice. So this is the time you are giving me 1 hour. So please utilize it. Do not sit idle. और यहाँ पे कोई प्रवचन चल रहा है ऐसा नहीं है. You have to practice. You have to write it down. You have to solve. Once you solve, then only the concept will be clear in your mind in a better way, right? Now you will understand if you just listen, but eventually you will forget it. But if you solve at the same time, you will understand what you have written and how the things have done. Let's check. Yes, correct. Very good. So this is the last problem which we have seen, जहाँ पे कोई एक ही आपको देखना है, या तो मिल्क या वाटर. वैसे यहाँ पे या तो आप दार्जिलिंग टी देखो या असम टी देखो. So then 4/11 and 2/10. If you consider that, then the middle value will be 6/19, right? Otherwise, if you consider 7/13 or 7/11 and 5/7, the middle value will be 13/19. So accordingly, you can solve and get the ratio. Ratio will be same in both the cases. So with this, we are done with mixture and alligation as well. So I will share you the notes, go through it. I know you will not understand it in one go, but at least try to get more and more knowledge and try to refer books and try to get the all types of problems, so that once you solve more and more problems, such type of problems, you will understand it in a better way. Thank you.